वंस अगेन फ्रॉम ले। आज सुबह का समय है अभी और थोड़ी ठंडक भी है, पर मैंने जैकेट नहीं पहनी है। एंड द रीज़न इज़ कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं रोज़ एक ही कपड़े नहीं पहनता हूँ। आई कीप चेंजिंग माई टी शर्ट्स इनसाइड और आज ब्लू डे है पर बाहर से जैकेट एक ही होती है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग वेदर लाइक दिस इन मे, बट इट इज़ कोल्ड। तो आज हम जाएंगे एक लेसन नोन जेम पे जो ले के पास ही है, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है। मुझे भी पता नहीं है, बट मेरे जो दोस्त हैं यहाँ पे उनको पता है एंड दे ऑल लोकल्स। तो सारा सामान जो भी चाहिए दिन के टाइम पे वो हमें लेके जाना है, विच इज़ अ लॉट ऑफ वाटर, थोड़ा कैमरा गियर, सम फूड एंड हाई स्पिरिट्स। सो वी हैव टेकन अ स्मॉल पिट स्टॉप। अभी हमारे लेफ्ट साइड पे है फे विलेज, जो फेमस है एज द होम टाउन ऑफ सोनम वांगचुक, द मैन आफ्टर होम द स्टोरी ऑफ 3 Idiots इज बेस्ड। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नीचे एक रिवर भी है। हमने अभी कुछ आधा घंटा पहले स्टार्ट किया है ले से। देयर आर 4 of us, देयर इज समीर, देयर इज मनीष, देयर इज आकाश एंड देन देयर इज मी। 4 लोग जा रहे हैं 2 बाइक्स पे। बट अभी छोटा सा पिट स्टॉप है टू सी दिस ब्यूटीफुल विलेज एंड द ब्यूटीफुल रिवर। तो हम फाइनली रुम्बक विलेज पहुंच गए हैं, विच इज़ सॉर्ट ऑफ द लास्ट प्लेस जहाँ तक हम बाइक में जा सकते हैं। और इसके आगे अभी थोड़ा सा हाइक करके जा रहे हैं आगे। नॉट क्वाइट श्योर वेयर द डेस्टिनेशन इज, एक्चुअली देयर इज नो डेस्टिनेशन। विल जस्ट वॉक अराउंड हियर। थोड़े बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत से दैट फॉल कलर्स अभी भी दिख रहे हैं। तो इट्स स्प्रिंग टाइम। आज यहाँ पे एक बड़े साहब आने वाले हैं, तो काफ़ी लोग हैं अब जो तैयार हैं। दे आर रेडी फॉर सेलिब्रेशन एंड फॉर वेलकमिंग हिम। तो थोड़ी चहल पहल दिख रही है इस गाँव में। हाँ, पर अभी देयर इज़ अ बिट ऑफ अ वॉक अहेड, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ सोनम जी हैं जो रुम्बक गांव के रहने वाले हैं। उनसे थोड़े सवाल पूछेंगे। सबसे पहले बताइए इस अपने गांव के बारे में। आपका टाउन है, आपका होम टाउन है, इसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली यहाँ पे 10 घर है और सभी लोग यहाँ पे होम स्टे चलाते हैं। बाकी सभी 10 हाउसेस। तो यहाँ पे बेसिकली ये लोग डिपेंडेंट है टूरिज्म पे। अच्छा। तो अभी कोविड की वजह से थोड़ा वो हो गया, अभी टूरिस्ट कम हो गया ना, तो इसलिए थोड़ा उनका लाइक लिविंग सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ जी। तो आपकी फैमिली भी होम स्टे चलाती है? हाँ जी, यहाँ पे सारे 10 हाउस होल्ड है सब। हाँ होम जी, स्टे। हाँ जी। तो आपके होम स्टे का नाम क्या है? छुनपा। छुनपा। या। और अगर कोई आपका होम स्टे बुक करना चाहे तो कैसे बुक करेगा? यहाँ पे बुकिंग नहीं होता है। अच्छा। बेसिकली टर्न वाइज होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले तो मतलब आप 5 आए हो, तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये नहीं है कि सारे घरों को मिलते हैं। 1 ईच पर्सन ऑर्डर में मिलता है। हाँ पहले जी। हाउस नंबर 1, फिर हाँ 2, जी। फिर 3, हाँ ताकि जी। सबका नंबर आए। हाँ जी। अच्छा। कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं हो। तो अब हम सीधे, अगर आपको आपके यहाँ पे रहना है किसी को, तो वो सीधे यहाँ पे पहुँच जाए या पहले फ़ोन करके कुछ पक्का करे, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं, ऐसे ही रूम तो अवेलेबल होते हैं 24 घंटे हमेशा होते हैं? हाँ जी। और कौन सा सीज़न बेस्ट है यहाँ पे आने के लिए? जून, जुलाई, अगस्त। जून, जुलाई। हाँ जी। और बेसिकली मार्च में विंटर में टूरिस्ट आते हैं, वो सिर्फ स्नो लिपर्ट के लिए आते हैं। अच्छा। क्योंकि विंटर्स में स्नो लिपर्ट थोड़ा नीचे आ जाते हैं ना विलेज साइड में। यहाँ भी देखने को मिलता है? हाँ जी। आपने देखा है? हाँ जी। बहुत बार देखा है। हाँ जी। अच्छा सोनम जी, आप क्या करते हैं? मैं अभी जॉब करती हूँ। क्या करते हैं आप? मैं एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ SNM हॉस्पिटल। ओके, ले में। हाँ जी। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सोनम। एंड अभी आप बिजी हैं, मैं जानता हूँ। आप तैयार हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेस में वेलकम करने के लिए। सो आई विल नॉट टेक मोर ऑफ योर टाइम, बट थैंक यू सो मच। हैव अ गुड संडे। You too. बाय। Bye bye.
समीर हैज़ बिन कमिंग टू लद्दाखी विलेजेस फॉर द लास्ट ईयर एंड हाफ, तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इनके घरों को पहचानते भी हैं. तो समीर से बात करते हैं, एटलीस्ट लर्न अ लिटिल बिट अबाउट हाउ दीज विलेजेस आर कंस्ट्रक्टेड एंड हाउ एक्चुअली द विलेजेस कीप देमसेल्व्स वार्म इन द विंटर मंथ्स व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू -30. इतना एक्सट्रीम वेदर है यहाँ पे. Next, let's talk to Sameer. So what we see behind us is a traditional Ladakhi house. Now you can clearly see that every house has got a separate room on the top. So this top one is normally used for any guest who is coming to your house, maybe your friend or maybe your relative. So they normally stay here, they gather there. It's a lower traditional Ladakhi sitting where everybody sits on the ground. They have tea. And in the center, it's normally a two-story building. So what we see in the middle is a room which is normally used during the time of summers, as you do not require that much of heat and you want some little bit of sunlight. In the down floor, there is a room which is in the center, which is normally used for living, cooking and everything, because the temperature drops to -30 here. It's very common. And next to the center room, there is a corridor all along. So in that corridor, normally animals are kept and there is a storage which is there. So whenever the outside cold which is coming inside, it gets absorbed by that center corridor, and in the center you will find that room which has got kitchen, and everybody sits there and then you can sleep in the night. So that's how people keep themselves warm in -30 degrees. Now on the top of every house we will find a heap of grass. So what normally happens is from the month of April till the month of October, that is the only time where the grass grows. After that, once the winter sets in, the grass dies down. So what people do is that before the winter sets in, they cut all the grass and they put and collect it on the top of their houses. So they keep feeding the animal throughout the winters this only grass. Otherwise there is no source of eating for the poor animals. So that's how they keep the animals also alive. अभी कुछ 12:30 बजे और हम लोग यहाँ थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं. अब बहुत शेड वाले यहाँ पेड़ तो अभी हैं नहीं, कुछ महीनों में इट सीम्स या कुछ हफ्तों में ही एक्चुअली इट विल ऑल बिकम ग्रीन और यहाँ काफ़ी सारी शेड हो जाएगी. पर अभी वी फाउंड सम ट्रीज विच आर काइंड ऑफ ड्राइड आउट राइट नाउ और उसके नीचे बैठ के थोड़ा चिल कर रहे हैं. मैंने फ़ोन पे टाइम लैप्स लगा दिया है क्योंकि मैं कैमरा वैमरा तो लेके आया नहीं था साथ में. बट व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज़. आई डेंट एक्सपेक्ट कि हम ऐसे रिमोट सी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे कोई और नहीं होगा, कोई टूरिस्ट नहीं होगा, सिर्फ हम होंगे और विल हैव द होल प्लेस टू आवरसेल्व्स. सो रियली इंजॉइंग, रियली कैचिंग द वाइब ऑफ द प्लेस. एंड थोड़ी देर में भूख लगने वाली है, सो विल हैव टू स्टार्ट ईटिंग समथिंग सून टू. बट फॉर नाउ इट्स जस्ट टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स. रिलैक्स मैंने बहुत बार बोल दिया, मे बी आई शुड जस्ट गो एंड एक्चुअली रिलैक्स. एक और कप में ये इनको दे दीजिए गुजराती भाई को, मोदी जी के गांव के ही हैं वो. Thank you. थैंक यू. आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा पर मेरी प्रीवियस लाइफ पे मैं बहुत क्लोजली हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता था. एंड आई यूज्ड टू वर्क विद विलेजेस एंड सब सेंटर्स. तो रुमक में भी देयर वाज अ सब सेंटर विच इज़ वेयर देयर वर 2 ANMs जो मुझे मिले वहाँ पे. एंड सो आई वेंट इन एंड सॉ द सेंटर एंड टुक अ पिक्चर विद देम. It's so nice. I'm going to send a picture to my teammates in Norway. Super nice. It's time that we just let it die. Oh, I can find a higher love over the clouds above. I can find a higher ground. I just have to reach past the summit of love. I can find a higher line over the clouds above.
While Akash and Manish got busy with work, Sameer and I decided to head off to Sabu village. Now Sabu is known as one of the cleanest and most beautiful villages of Ladakh, and it surely didn't disappoint. Finally, we went to a place popular with the locals to watch the sun go down. तो अभी समीर जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह पे लेके आए हैं हमें यहाँ पर. दिस इज़ कॉल्ड सिंधु घाट. बेसिकली सिंधु रिवर, इंडस रिवर का घाट है ये, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पब्लिक स्पेस. यहाँ पे आप शाम को आके बैठ सकते हैं. देयर इज़ अ कैफ़े हियर, सो यू कैन गो देयर एंड ईट सम फूड एंड ऑल्सो ड्रिंक सम नाइस, एक्चुअली नाइस मिल्क टी ऑल्सो. और यहाँ पे कभी कभी कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं. सो कीप एन आई आउट इफ़ यू आर कमिंग हियर. मे बी देयर इज समथिंग हैपनिंग हियर एंड यू कैन कम अटेंड दैट. But otherwise, I think it's a great place to come just to relax and make time lapses the way I am making them right now, and watch the dogs play around, because that's what we just saw. तो अभी हम यही करते हैं. 6 बज गए, थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा and we'll start heading back towards Leh. तो आज का प्लान इतना ही है, and with that we'll be done with the day.